वेलकम टू फ्यूजन क्लासेस। तो पिले आज हम काम करना गोटे गॉस लॉ एप्लीकेशन लास्ट दुटा के क्लास रे हम दुटा एप्लीकेशन पढिजु आज तार का हम पिले आ गोटे एप्लीकेशन पढो। तो आज रो एप्लीकेशन का पिले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज hollow spherical cell गोटे यूनिफॉर्मली चार्ज hollow spherical cell रे हम का करना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करना। hollow spherical cell रे करना फुटबॉल देखि छ फुटबॉल में जो कान दिस है ना तो हटा क्वेश्चन hollow तो hollow spherical cell रे करना त मिडिल वर्ष के किछि नहीं है। तो ई जगह में का करना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करना गोटे hollow spherical cell। तो पहले कहां देखना बिले consider a spherical cell of charge of radius r गोटे spherical cell ने हम जे कि चार्ज ही दिबा और तार रेडियस ही दिबा बिले कैपिटल with a uniform charge density sigma तार का बिले चार्ज डेंसिटी सिग्मा थियो बुझ पाना। consider a spherical cell of charge of radius capital R with uniform charge density sigma गोटे स्फेरिकल सेल देना जहां रेडियस थिबा कैपिटल आर और सेटा काना हेतिबा बिले तार यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ता सिग्मा हेतिबा। नॉर्मली बेटा स्फेरिकल सेल ले जेटा कि यूनिफॉर्मली चार्ज थिबा ई वाला बिले सुवाल थिबा आधा रेडियस कितनी हितिबा बिले कैपिटल आर तो इधर लेकर बिले आमे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना इस स्फेरिकल सेल बाहर भी रह पारे स्फेरिकल सेल सरफेस भी रह पारे और स्फेरिकल सेल भीतर भी रह पारे। तो काना करना बिले गोटे पॉइंट पी देना जेंटा कि सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल नो स्मॉलर डिस्टेंस रहता बिल्कुल कहां लेकर जाकर बिले टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी to determine the electric field intensity at any point P at a distance r from the center of spherical cell जेंटा कि center of spherical cell रो small r distance रे थिबा से जगह में काना करबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काना P टा केन जगह रही पारे तर तीनटा के सासी पारे when point P is lie outside the spherical cell जन spherical cell नहीं थी मां तर outside के P रह पारे दुई नंबर केस का नहीं पारे ले when point P lie on spherical cell so spherical cell ऊपर रह पारे तीन नंबर केस का नहीं पारे ले when point P lie inside the spherical cell मुई बाला ले जेन केस मागितो तारा में आंसर लिखना पहला गाना बोलना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करना गोटे होलो स्फेरिकल सेल रे कतरोडा का लिखना कंसीडर अ होलो स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिखना तापरे गाना करना कैंसी भी पॉइंट तारा स्फेरिकल आउटसाइड भी पारे इनसाइड भी पारे और स्फेरिकल रो सरफेस ऊपर भी ही पारे। तो से जगह हम गाना करना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बाहर करा बुझे ना बिले तो इधर काना करना 1 बाय 1 हमें काना करना केस डिस्कशन करना। तो पहला का केस काना बिले पॉइंट P lie outside the spherical cell जे नाम spherical cell ले छु जहां रेडियस होची कैपिटल R से पॉइंट P ला काना हमसे spherical cell ला आउटसाइड ने अछि बुझिबालो जेंटा कि सेंटर ऑफ होलो स्फेरिकल सेल नु स्मॉलर डिस्टेंस रे अछि। तो आमे काना करसु बिले कहला नेट फ्लक्स करसु नेट फ्लक्स काना से बिले इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds बुझे ना तो देखो E डॉट ds काना से E ds cos थीटा तो बिले ई जगह रे एंगल किते क्रिएट होची देखो
इधर डायरेक्शन के ऊपर होছে इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी समान n कैन बी आउट eb तो एंगल यार के देना पहले थीटा इक्वल टू यार के देना 0 डिग्री तो एवे जन हम e ds cos थीटा लिखना पहले इंटीग्रेशन ऑफ e ds cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री का वैल्यू कितने ऐसे मिले 1 तो ई पोर्शन का ना आइए पहले 1 ହେଇଯିବ ତ କାଣା करबा e कांस्टेंट ने बाटे कोले आबा इंटीग्रेशन ऑफ ds गोटे स्फेरिकल सेल जदी हम नेथिबा होलो स्फेरिकल सेल तार ds जदी इंटीग्रेशन करना वाले काना हसी बिले 4 पाई r स्क्वायर मन रखो एटा बुझबाला न्यूमेरिकल के देले हेल्प हे पारे ds और इंटीग्रेशन जदी स्फेरिकल सेल होलो स्फेरिकल सेल ने जो काना 4 पाई r स्क्वायर तो ये हम p नहीं छू p रे केना है स्मॉलर है तो लेखा में भी e into 4 pi r square तो इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds के बना भी हमें e into 4 pi r square लेके हम इक्वेशन 1 तब दुई नंबर कथा काला भी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ according to Gauss law Gauss law का लगाना जल्दी क्लियर हमें इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds इक्वल टू कहां से क्लियर q by epsilon naught इरेगा हमारा इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमें कहां लगाना क्लियर e equal to q by 4 pi r square into epsilon naught बुझा बले क्या बुझा जदि हमें ई एरिया के देन एरिया लिखना 4 पाई r स्क्वायर की यदि a रे इंडिकेट करबा पहले काना कहना मिले q by a epsilon naught बुझला नहीं तो स्टार्टिंग में हमें कहना लिखना सिग्मा वाले तो चार्ज डेंसिटी लिखना तो सिग्मा इक्वल टू हमें कहना लिखना मिले q by a तो implies that we q equal to हमारा लिखना a sigma तो q वाला का वैल्यू पुट करना हमें कहना मिले e equal to a sigma by a epsilon naught a को क्या मिले तो कहना करना sigma by epsilon naught भी पाई करना बुझिए ना ई केस से कहना करना जब स्फेरिकल सेल लेना तो आउटसाइड रे p के रखना आता इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी करना है बुझिए ना नोट कर लो दुई नंबर केस रे काला करबा मिले p के ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल रो सरफेस से हमें काला करबा p के रखना काला क्या करबा पॉइंट p lie in the spherical cell where spherical cell लेथिना ई सरफेस लेगा p रखना तो ई केस में लिए कैपिटल आर जहां स्मॉल आर भी समान ई केस में क्या पाएंगे कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर क्या है कि पॉइंट p टा नहीं थी ना से पॉइंट p टा का नाम होचे स्फेरिकल सेल रो सरफेस रे अछि बुझला बिले तो ये का नाम बिले पूरा समान है जे हमें स्मॉल आर लिखो तो ना इधर का लिखना कैपिटल आर लिखना क्या है कि small r equal to capital R is जगह we are समान करवा net flux का नाम होगा बिले net flux इक्वल का e dot ds cos थीटा है जो cos 0 डिग्री 1 किला ds dot ds 1 बोलते हैं हमें लिखना बोलते हैं e 4 pi r square ये सुनो खाली स्मॉल r जागले
कैपिटल आर का चेंज हिची बाकी सब सम अब का करना अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ है ना खाना क्लियर E dot ds equal to q by epsilon from equation 1 and 2 दो इक्वेशन कंपेयर करना लिखना है आपके e 4 pi r square equal to q by epsilon naught e equal to q by 4 pi r square epsilon naught हमें गाना बोलना है 4 pi r square के एरिया बोलना a बोलना अगला होगा फिर सिग्मा इक्वल टू q by a implies that q equal to sigma n होता है q जाने का पुट करना पड़ेगा सिग्मा n पुट करना बुझे ना अब 4 pi r square जाने का होगा a पुट करना a कंटिन्यू होना पड़ेगा काना करना e equal to sigma by epsilon मुझे लगे प्रीवियस के से जनता करना पूरा सेम है खाली ये स्मॉल r लिख देना इजारे का करना कैपिटल r लिखें से जगह स्मॉल r क्या है लिख देना p टा आउटसाइड दे दिला और सेंटर में p रो डिस्टेंस स्मॉल r देना इजारे का लिख दिले p टा सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल रे আছে तो रेडियस केते दिला हमर स्फेरिकल सेल रे कैपिटल r तो स्मॉल r इक्वल टू कैसे कैपिटल r है बुझे लगे लेकिन हम कथा है इसकी में देखो पहले हार्ड केस करा में पहले point p lie inside the spherical cell जब spherical cell नहीं दिना तो inside रे p अछि बुझे लगे जेते बेले p टा inside रे अछि बिले चार्ज का होती है स्फेरिकल होलो स्फेरिकल सेल लेते हैं तो होलो स्फेरिकल सेल में ना चार्ज की जगह रखा है सरफेस रे तो इनसाइड में क्या है चार्ज नहीं तो ई केस में गाना इनपुट के लिए q equal to 0 q equal to 0 तो हमें गाना इनपुट के लिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds इक्वल टू गाना मिले q by epsilon q 0 है लगाना है अभी इंटीग्रेशन 0 हर साल मॉड्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे हमें 0 इस जगह में काम करना पड़े इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना तो जे ना में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को क्यों देगा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बिल्कुल तेरा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्वेश्चन बिल्कुल इधर आपको ना करें शील्ड ना करें गुडे सरफेस के तो इसका डेफिनेशन में लिखा है it is the process of isolating a certain region of a space from a external field गुटे external field नो certain region के लिए हम isolated कर देमा इधर एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर दे बुझे लगे এটা के फाराडे केज भी क्वेश्चन गेस ये वाला तो नॉर्मली करने से दिले शील्डिंग में लगाना गुटे एरिया के हमें सील कर देना आउटर सरफेस में गुटे एरिया के हमें सील कर देना बुझला पहले तीनटा केस আছে तीन केस के हमें वन बाय वन करबा जेंटा क्वेश्चन हमके देथिबा तार हमें आंसर लिखा खाली जे फाइंड द इलेक्ट्रिक टेंडेंसी जब होलो स्फीयर तो होलो स्फेरिकल स्फीयर बोल हमें तीन केस के करबले पड़ो बुझला पहले